चलो, we'll start with a new topic, introduction to electric dipole. ये फार्मूलास अगर आ गए तो सेम मैग्नेटिज्म आल्सो फार्मूलास विल बी सेम, उसका नो सिंबल सिंबल चेंज किया तो आ जाएगा सेम. ओके, चलो, डाइपोल. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? नेम इटसेल्फ इंडिकेट डाइपोल मींस, देखो, electric dipole is system of two equal and opposite point charges separated by a very small and finite distance. That is called as dipole. Okay. So what is saying? Two equal and opposite charges. So minus q plus q. Two equal and opposite charges separated by a very small distance. Okay, small distance can be A, B, C, D, anything we can keep. But in our textbooks mein वगैरह में, they'll use one thing, that is L and L. We'll put from here to here is L and from here to here is L. ऐसा लगाएंगे. Okay, two equal and opposite charges separated by a very small distance, a बहुत small distance and finite distance. Okay, that is called dipole. Example can you give? इसका डाइपोल का रियल लाइफ एग्जांपल केमिस्ट्री में भी आया होगा ना. केमिस्ट्री में आल्सो डाइपोल बोल के सुना है. फर्स्ट ईयर आया, सेकंड ईयर थिंक नहीं आया. ओके, सेकंड ईयर में आएगा. ओके, इसका एग्जांपल इज वी विल टेक ए लाइक NaCl का Na प्लस Cl माइनस. देखो, ये Na प्लस एंड Cl आर सेपरेट बाय इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, स्मॉल एंगस्ट्रॉम्स में रहेगा. सो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a very small distance. This one dipole. NaCl is nothing but dipole. Okay. So definition समझ में है. Very important dipole का two equal and opposite charges. देखो minus q plus q separated by a very small distance is called as electric dipole. Now we will introduce a concept of dipole moment. Dipole moment is vector quantity है. It is vector quantity. मतलब डायरेक्शन भी रहेगा ना. So dipole moment का फॉर्मूला है, इसका मैग्नीट्यूड दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम, राइट. सो उसका मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2L. दैट इज इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. ओके, एल डाइपोल q into 2L is the formula and direction is given by negative to positive. Direction is given by minus to plus. मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर से दिखाओ बोले तो टू शो लाइक दिस, नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस इज डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन. केमिस्ट्री में उल्टा रहेगा, प्लस टू माइनस. क्यों बोल के उनको पूछो, केमिस्ट्री साथ बोलेगा. ओके, सो माइनस टू प्लस फिजिक्स में यूज करने वाला है. सो डेफिनेशन याद है ना. टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको डाइपोल बोलते हैं. डाइपोल मोमेंट इज q into 12 and q is the magnitude we should take into 12 and direction is from negative to positive. Copied? चलो, we'll do the numericals based on this formula q into 12 के बेस में. Okay. Okay. Their charges are given and coordinates are given to you. Find the electric dipole moment of system. System का dipole moment चाहिए. Is vector quantity, right? System का dipole moment चाहिए. Okay. Charge QA is positive charge. Charge QB is negative charge. Which axis में it is there? Charge QA, tell me. X axis है, Y axis है, Z axis है. Z axis. Z axis, right? ये इसका Z ये axis मान लो.
This is z axis मान लो, this is y axis, this is x axis. Okay, and this is negative z axis minus it. Okay, 0 comma 0 comma minus 15 means it is here. Here QA is there. And 0 comma 0 comma 15 is ऊपर है, which is QB. देखो equal and opposite charges are there, right? Plus 2.5 minus 2.5, equal and opposite charges are there. And distance between them is how much? And this is negative charge or positive charge? This is positive charge. And this is negative charge, right? Okay. Now tell me, dipole moment of the system का dipole moment चाहिए. Find करो. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मालूम है ना? यूज करो एंड सॉल्व. डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला इज q into 2l. इन दोनों का डिस्टेंस इज 30, राइट? 30 into 10 power minus 2 meters. So 75 into 10 power minus 9. And units are q into 12, right? Q is Yeah. coulomb, Coulomb L is meters. meter. Coulomb meter. So dipole moment is q into 12. So QL Q मालूम है ना? 2.5 into 10 power of minus 7 into 12. 12 का डिस्टेंस अगेन पीपल क्या मिस्टेक करेगा मालूम है? अगेन 2 into L करेगा, ऐसा नहीं है. टोटल डिस्टेंस इज ओनली दिस वन, राइट? 30 into 10 power of minus 2. ओके, सो सॉल्व किया तो कितना आएगा? 75 into 10 power of minus 9 कूलम मीटर. आया? चलो नेक्स्ट. Find the dipole moment of the combination of charges. So either minus q charge is there, either plus 2q charge is there. Here minus q is there. 0 comma a में ये है, a comma 0 में है. ये वाला 0 comma 0 origin में रखा. इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल इज देयर. डाइपोल में बोलते टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस शुड बी देयर. तो डाइपोल इज देयर और नॉट देयर. इस सिस्टम में minus q plus 2q minus q is there. Sathik, tell. Dipole is there or not there? Not there. Okay. So usko dipole is, but he is asking find the dipole moment of the combination, right? So देखो, if you see 2q को I can write q and q because scalar quantity है ना. q plus q is 2q. Now देखो, 2 equal and opposite charges, 2 equal and opposite charges, dipole बन गया. You have to split the charge into like this. Okay. Now dipole moment का सिस्टम का चाहिए ना. So first dipole moment का डायरेक्शन देखो, -2 plus is a dipole moment. I can call P1. And second dipole moment का -2 plus, it is like this, P2. And angle between them is 90. Like, you know, we found force कैसे है vectorially we are trying. First we put arrows. Second में we will try to find P1, P2. P1 कितना होगा? Q into 2L. Distance between them is how much? A. 2L is A. And P2 is also Q into A. So since both are same, I call this as P. This is also P. This is the second step. Right? Third step mein, we are drawing actually downwards is P. P1 is P only. This side is P. The resultant is P root 2. Right? 90 degrees fallen. Therefore, net dipole moment is P के जगह में Q A into root 2. Net dipole moment. Understood? Yes. So आपको डाइपोल मोमेंट बनने के लिए चार्ज को स्प्लिट अप करने, स्केलर क्वांटिटी है ना, Q and Q we can put origin में. अबिट ये करो, सेम मॉडल करो. Find the determine the electric dipole moment of system of 3 charges.
नेट डाइपोल मोमेंट चाहिए. √3 QL. √3 QL. The answer. आया. Yes. So -2q को I will split into -q करके we have to solve. √3 QL is answer. Yes. Now we will try to find electric field. Lesson name electric field, right? So electric field due to dipole. Dipole के वजह से we'll try to find. मतलब 2 charges रहेगा, 2 equal and opposite charges रहेगा. So first one, electric field due to axis of a dipole at a distance r from center of dipole. मुझे dipole में center से r distance दूर में I want to find electric field due to dipole. देखेंगे -q डेरिवेशन जैसे करना है, बट अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल भी इजी हो जाएगा. +q सेपरेट बाय डिस्टेंस r, सेपरेट बाय डिस्टेंस. इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, इसको l एंड l. वो क्या बोला, ए डाइपोल है. ओके, सेंटर डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल. इधर से r डिस्टेंस दूर में along the axis में इस पॉइंट में p में I want to find electric field at this point. Center r से r should be taken always from center of the dipole. Okay. Now same method हम लोग न्यूमेरिकल भर के किया ना, ऐसे ही सेम मॉडल में. टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज की वजह से होगा एट द पॉइंट p? बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज आल्सो एंड बिकॉज ऑफ सेकंड चार्ज आल्सो, राइट? अनो सॉल्व करो. बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स, I call this as E1, and because of plus charge electric field at this point is away, I call E2. Now I want net resultant. Net tell me net field will be right side or left side? Net electric field which is greater, E2 or E1? E2. Why? So distance is closer. Less, बहुत ही ज्यादा है ना. So net electric field find करो. Net electric field is simply E2 minus E1. Net electric field will be in this direction. Okay. So इधर से इधर तक डिस्टेंस इज हाउ मच? चल में ये डिस्टेंस कितना होगा? फ्रॉम हियर टू हियर इज r, फ्रॉम हियर टू हियर इज l. R Here minus L. r minus l. Okay. From here to here, from here to here is r, ये वाला l है. R plus. r plus l. नो खत्म. We know the formula because of point charge kq by r square बोल के. Okay. E2 second charge के वजह से it is kq by r minus l whole square minus because of first charge electric field at this point is k, we should not put sign, right? kq by r plus l whole square. Okay. Now take common and take LCM and solve. kq into 1 by r minus l whole square minus 1 by r plus l whole square. Now take LCM. R plus L whole square is R square plus L square plus 2RL minus R square plus L square minus 2RL by A plus B into A minus B, R square minus L square whole square. Okay, KQ into R square minus R square cancel, L square minus R square cancel. So minus of minus plus आएगा. So 4 R L
by r square minus l square whole square. समझ? Okay. Here I want in terms of dipole moment terms में चाहिए. Okay. So net electric field is equal to so I can write like this. एक 2 को बाहर ले रहा हूँ, 2k ब्रैकेट में q इंटू 12 इंटू r भी बाहर ले रहा हूँ बाई r स्क्वेयर माइनस l स्क्वेयर होल स्क्वेयर. देखो ये 2 into 2 4 only, r k r everything is same only. I want in terms of dipole moment. Tell me q into 12 को क्या बोलते हैं? P. P, right? Dipole. So therefore net electric field is 2 k p r by r square minus l square whole square. Okay. And if you see in a vector form में देखो dipole moment का direction is negative to positive, and net electric field is also in the same direction of dipole moment. That's why when you're writing in vector form, we should not put any minus. Same direction में बोल के. Okay, this is a formula 2 kp r by r square minus l square. Okay, for short dipole मतलब ये बहुत छोटा डिस्टेंस है ना. आई टोल्ड यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल ओनली, टू इक्वल ऑपोजिट चार्जेस वेरी सेपरेट बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस. मतलब L is much less than R. So which value we have to neglect? L R. L छोटा वाला को निकाल देंगे, ये निकाल दो. So R square whole square is R power 4. एक R cancel. So finally E net electric field along the axis, E axis, along the axis में क्या है? Tell me. 2 k p by r cube. This is the formula for a short dipole. दोनों formula learn करना पड़ेगा. How to know? We will check L is much less than R or not. The question में L value they will give in millimeters and R value they will give in meters. That means L is much less than. और दोनों centimeters में 1 and 2 centimeters दिया तो we have to use this formula. We cannot neglect L. So then ये formula is correct. So दोनों formulas important है. 2 kp by r cube and 2 kp r by r square minus l square whole square. देखो डन. दिस एक्सिस का डन. नेक्स्ट इक्वेटोरियल में डाइपोल इक्वेटर में सेम मेथड करो, ट्राई करो. हो माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेट बाय डिस्टेंस एल एन एल इस सेंटर से एट इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एग्जैक्टली आर डिस्टेंस दूर में I want to find electric field at this point P. Okay. Now ये distance ये वाला okay ये angle theta वाला. Now I want to find electric field at this point. Same method. हम लोग जो भी normally numericals कैसे कर रहा है ऐसे ही करना है. At this point में for negative charge electric field is towards E1 and for this one electric field is away along the line joining E2. Okay. Now E1 E2 find करने के arrows we placed. E1 E2 find करो. E1 is how much? E1 is in the electric field कितना होगा? K Q by ये distance कितना है? चल बे ये 90 डिग्री है ना. ये कितना होगा distance? Under root R square plus L square, right? So ये distance क्या होगा? Under root R square plus L square. Okay. So KQ by R square means nothing but square वाला R square plus R L square आएगा because square will be cancelled.
फॉर दिस वन इसका भी करो, कितना होगा E2 कितना होगा, E2 इज ऑल्सो के क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ओके, रूट का कैंसिल हो जाएगा। ओके, नो इसको ई बोलो, ए भी ई है। दिस इज सेकंड स्टेप डन, वी फाउंड रिलेशनशिप। थर्ड स्टेप में क्या है, डायग्राम ड्रा करो। दिस इज ई, दिस इज ई, एंड दिस इज थीटा, मींस दिस आल्सो थीटा, दिस आर थीटा, बिकॉज वी डोंट नो थीटा, राइट? नाउ टेक द कंपोनेंट्स, ई का सब कंपोनेंट इज ई cos थीटा एंड डाउनवर्ड्स विल बी ई sin थीटा, एंड सिमिलर इसका ई cos थीटा एंड ऊपर कंपोनेंट इज ई sin थीटा। Cancel, cancel. So therefore, net electric field is E perpendicular will be 2E cos theta. Now E के जगह में लगाओ and cos theta के जगह में फॉर्मूला लगाओ, कितना आएगा देखिए। So 2E is K Q by R square plus L square into cos theta. What is cos theta? Adjacent by hypotenuse. So L by under root means whole power 1/2. ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, राइट? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, अंडरस्टूड? हाँ, नाउ टेल मी q into 2l, q into 2l is nothing but p only, so e perpendicular is k p by ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर होल पावर 3/2। ओके, देखो 1/2 1 3/2। ओके, here if you see the dipole moment direction is minus to plus, and electric field का direction, net electric field का direction is like this, which is opposite direction. That means we should, when we are talking about vector, we have to put minus. This is the formula for this one, minus kp by r square plus l square whole power 3/2. now इसका short dipole का करो, देखते हैं। short dipole when l is much less than r, तो l को नेग्लेक्ट करेंगे, आर स्क्वेयर स्क्वेयर के आर क्यूब होगा, सो ई परपेंडिकुलर विल बी माइनस के पी बाई आर क्यूब। सो इसमें भी आपको दो फॉर्मूलास लर्न करना पड़ेगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। वेन एवर इन परपेंडिकुलर में, वेन यूर टेकिंग डाइपोल मूवमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्टिंग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वाला। So will this be true for like all cases? There'll be ऑल केसेस में मतलब like E net and P will always be in opposite direction for हाँ, each कभी other. भी इन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन। So then what about axial? Will they always be in the same direction? हाँ, सेम डायरेक्शन एक्सिस में। ओके, देन जनरल फॉर्मूला भी आएगा, we'll do that one. सो हम लोग जनरली पीपल विल रिमेंबर शॉर्ट डाइपोल का ज्यादा फोकस करेगा, शॉर्ट डाइपोल वाला इजी है बोल के। इफ यू सी मैग्नीट्यूड वाइज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सिस एंड इक्वेटोरियल इन शॉर्ट डाइपोल? इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, माइनस निकाल दो। इफ यू सी इक्वेटोरियल एंड एक्सिस का शॉर्ट डाइपोल का, व्हाट इज द तेड़ा क्या है उसमें? For axial, there's 2 2 kp by r क्यूब, एंड इक्वेटोरियल में kp by r क्यूब। इफ यू सी माइनस निकाल दो, मतलब किसका ज्यादा है? एक्सियल, राइट? axial. So in magnitude wide, if I talk, E axis is 2 times of E equatorial. When R is same, magnitude wise, if you see, this is the one you have to understand. Okay. So एक बार formula पे ऐड करो. In formula sheet also given 15th A B formula पे ऐड करो. That's why printout ले लो बोल के बोला.
फर्स्ट इनिशियली शॉर्ट डाइपोल का ऐड कर लो, बाद में यू कैन बाय दैट वन. शॉर्ट डाइपोल इजी राइट. सो टेल मी शॉर्ट डाइपोल का ई एक्सिस कितना होगा? 2kp by R cube and equatorial minus KP by R cube. minus kp by r cube. And you have to understand in perpendicular bisector में always dipole ऐसा है तो opposite direction में force will be, मतलब net electric field will be there. Okay. And this also important है, when a charge is placed in a uniform electric field उसके ऊपर force लगेगा कितना है formula? If a charge q is placed in electric field, how much force is acting on the electric field? QE. QE is formula. Negative है तो opposite direction में. That one is important. चलो हाँ एक क्वेश्चन करेंगे, एक पुराने आईआईटी में पूछा है वाला. व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी? ए डाइपोल दिया है, मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस डाइपोल, एंड डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर. फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल. इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब ए चार्जेस, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द डाइपोल. ओके, अब देखो, you have to understand this small thing. Question understood? He is asking force on the dipole moment. Okay. Now tell me, force का basic formula is QE, right? Basic formula. देखो, अगर this dipole moment is like this, it is perpendicular में है और axis में है. This dipole moment का direction में हिसाब से the charge is in perpendicular axis. perpendicular bisector. मतलब डायरेक्शन कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ एक्ट होगा? डाइपोल मोमेंट ऊपर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड्स, राइट? हाँ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स द फोर्स इज आल्सो डाउनवर्ड्स, राइट? तो मेरे सो मतलब सी ही इज आस्किंग फोर्स ऑन दिस वन. फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड फोर्स ऑन दिस चार्ज, देन वी विल सी. ओके, सो दिस डाइपोल मोमेंट की वजह से there is a force acting in the downward direction, and that force is how much? Q into E, and E is how much? E is how much in perpendicular bisector में? K P by, because equatorial, right? Perpendicular bisector formula क्या है? KP by R cube, right? R is what? A. KP by R cube. Okay, a force है, act हो रहा है. हाँ, now मतलब this dipole moment की वजह से the force acting on the charge is downwards, right? Same thing, because of this dipole moment the force is acting downwards, right? That means if this dipole moment is applying a force on this downward direction, by the Newton's third law, these charges also will apply a double force on the dipole moment. समझ में आ रहा है? This dipole moment is applying a force on these two charges by Newton's third law के हिसाब से action reaction pair, right? These charges also will apply a same force in the opposite direction, मतलब F and F, मतलब 2F force is acting on the dipole moment. So he is asking that one, right? Find the force on the dipole moment का force. So कितना होगा? Net force कितना होगा? Net force will be 2F. 2F is QKP by AQ. This is answer. Which is the upward direction. स्मॉल आईआईटी में एक बार पूछा था. सो आपको चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं पूछा, इज आस्किंग फोर्स ऑन डाइपोल मोमेंट, बट वी डोंट नो फोर्स ऑन, नया है ना, डाइपोल मोमेंट का फोर्स क्या है बोल के लगेगा. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंस इट इज प्लेस्ड इन इक्वेटोरियल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स द फोर्स इज आल्सो डाउनवर्ड्स, राइट? because whenever electric field में charge is placed, there is a force acting in the direction of the force, so direction of electric field, right? So that's why force F लगा है, सेम डायरेक्शन में F लगा है. सो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से दोनों फिर से इसके ऊपर फोर्स लगेगा 2F. दैट F ऑलरेडी यू नो, आई सब्स्टिट्यूट. ओके Sir, one doubt. टिल मी. Sir, instead of A, aren't we supposed to use the perpendicular distance? परपेंडिकुलर, According to the formula. Perpendicular distance. In the formula, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाउ मच इसका? A. हाँ, ये वही डिस्टेंस, मतलब ऐसा नहीं, देखो माइनस क्यू
plus q. ये dipole moment is like this. Dipole moment is given like this. इधर से perpendicular distance वाला only r, right? Okay. That distance only should take. चलो next. Now axis and equator हो गया. If they are some 60 degrees, 30 degrees में dipole का वजह से 30 degrees angle में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ बोले तो कैसा करेगा देन? ओके, सो उसके लिए आपको इसका भी थोड़ा डेरिवेशन आपको चाहिए. भाई बिकॉज छोटे छोटे क्वेश्चंस में देखो अभी वो डेरिवेशन किया तो ही यू अंडरस्टूड दैट डाइपोल मूवमेंट इज अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ डायरेक्टली फार्मूला इफ इट टेल वो तो बाय हार्टिंग ऐसा होगा समथिंग समथिंग, अरे वाई नेगेटिव वाई अपोजिट क्या है लगेगा. थोड़ा डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू विच आर इंपॉर्टेंट वी विल डू द डेरिवेशन. ओके चलो नो इसका भी एक छोटा डायग्राम करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे हो जाएगा. देखो माइनस क्यू प्लस क्यू separated by a very small distance L and L. Okay, मुझे क्या चाहिए? I want to find electric field at certain angle theta. देखो इधर से r डिस्टेंस दूर में एंगल थीटा में I want to find electric field at this point P. So it is neither axis nor perpendicular bisector, right? It's at an angle theta. ये आगे तो दिस इज लाइक जनरल फॉर्मूला. ये आगे तो एक्सिस भी आ जाएगा, इक्वेटोरियल भी आ जाएगा, एनी एंगल आ जाएगा. दिस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आप जो डायरेक्शन. ओके, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज लाइक दिस, नेगेटिव टू पॉजिटिव. डाइपोल मोमेंट पी इज नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, मैं क्या करूंगा डाइपोल को आई विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. लाइक पी का इस तरफ कंपाउंड विल बी पी कॉस थीटा and इसका perpendicular component will be P sin theta. After splitting इसका कुछ काम नहीं है P का. Now we have two dipoles. We have two dipoles. Okay. Now tell me, for this dipole, this point will be axis equatorial. For P cos theta, this point is axis equatorial. पर P cos theta. P cos theta dipole moment is in this direction. उसी डायरेक्शन में वो पॉइंट है ना, वो पॉइंट है ना, दैट इज एक्सिस, राइट? एक्सिस में टेल मी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर और ऑपोजिट एक्सिस में? Same direction. Same direction. So this is axis, E axis. Okay. Now tell me, for this dipole moment, this point is equatorial point or axis point? Equatorial. Equator point. And dipole is like this, means net electric field is like this in the opposite direction. P perpendicular. Something on the video. Okay, so net resultant will be ऐसा, इससे parallel one line, इससे parallel one line. The net resultant will be in the upward direction. Upward आएगा exactly. Net resultant will be like this. E net. Net resultant will be ऐसा आएगा. Okay, इसको अल्फा मान लो. द रिजल्टेंट मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, मतलब ये एक्सिस से कितना एंगल है, अल्फा एंगल है. एंड दिस इज थीटा. डाइपोल ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में थीटा. नाउ आपको रिजल्टेंट तो आता है, आपको रिजल्टेंट को कैसे फाइंड करेगा? ये एक्सिस फॉर्मूला कैन टेल में के पी के जगह में पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब. आर क्यूब इज आर क्यूब ओनली. एंड इज ई परपेंडिकुलर विल बी सॉरी ई एक्सिस 2kp, राइट? इसका क्या होगा के, इस ई परपेंडिकुलर क्या होगा? पी के जगह में पी साइन थीटा लिखने का. टेल में के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब. समझ में? पी के जगह में पी साइन. नाउ रिजल्टेंट फाइंड करो बोले तो आपको नेट रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? नेट रिजल्टेंट. सो आपको सॉल्व करके फाइनल आंसर आएगा रिजल्टेंट. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू. नेट रिजल्टेंट इज फॉर्मूला लिखो के पी बाय आर क्यूब, के पी बाय
r cube under root 1 plus 3 cos square theta. This is a net resultant of any angle theta. Kp by r cube under root 1 plus 3 cos square theta is a formula. Okay. And we have a relation between alpha and theta. See, derivation में नहीं किया अभी. Normally कहता ER is equal to under root E axis square plus E perpendicular square करके solve कर तो आ जाएगा, ये आएगा. Okay. So that we are writing the formula Kp by r cube under root 1 plus 3 cos square theta. And we have a relation between alpha and theta. वो भी लिखो. Tan alpha is half tan theta. Tan alpha is half tan theta is a formula. मतलब इसका आधा एंगल इज नथिंग बट tan अल्फा. समटाइम डायरेक्शन पूछेगा ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल मींस थीटा प्लस अल्फा दोनों करना पड़ेगा टू गेट द ओरिजिनल डायरेक्शन. ओके. द रिजल्टेंट कितना डायरेक्शन है ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट से मींस कितना थीटा प्लस अल्फा एंगल में द रिजल्टेंट इज देयर बोल के बोलने का. ओके. नाउ टेल मी व्हेन द पॉइंट इज हियर एंगल इज हाउ मच, थीटा इज हाउ मच. When the point is along the axis में the theta angle is 0. 0. Substitute cos 0 is how much? 1. 1 into 3, 3. 3 plus 1 is 4. Under root 4 is 2. 2 kp by r cube, which is axis point. Okay. Now tell me when the point is at perpendicular bisector. Tell me कितना angle रहेगा? 90. Cos 90 is 0. kp by r cube, which we know. So this is the general formula we can use for the axis and equatorial or any angle also. Understood? So एक बार फॉर्मूला पढ़ो तीनों का. फॉर्मूलास I'll ask. Sir, Tell me. is it possible for one point chart to have more distance than the other? One Like point one will be 2L, other will be L. like this, it can be possible. Anything. Plus q minus q, that time diagram will change. But answer will be same. Formula will be same. No, sir, Okay. like one will be 2L distance from point O and one will be L distance. नहीं ऐसा नहीं है. Same distance बीच में center से. Let's we should take the same thing. It So can be that- they will change this distance 2L कर सकते, 3L कर सकते, but they will not change 2L 3L ऐसा नहीं करेगा. Okay. समझ में आ रहा है? हाँ. So आ गया formula Kp by r cube, which is a formula for the equatorial into under root 1 plus 3 cos square theta. Tell me Shivangi, try. E net electric field general formula dipole की वजह से. Q into 2L. अरे dipole movement नहीं है. Electric field I want. Electric field this general electric field, net electric field. Kp by Cube into root over 1 plus 3 cos 3 square. cos square theta. And what is the relation between alpha and theta? आने बोलो. Alpha and theta is Tan alpha is equal to 1 by 2 tan theta. theta. Okay. चलो एक क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करो. हाँ तो बड़ा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करो, ट्राई. An electric dipole having dipole moment P is placed at the origin such that its equator is y-axis.
Okay, so what is saying, this x axis डायग्राम ड्रॉ करो so that थोड़ा आएगा y axis. Okay, वो डाइपोल को ऑरिजिन में लगाया such that इसका इक्वेटर इज y axis. देखो, I place a dipole at the origin such that, देखो, इसका इक्वेटर इज y axis. डाइपोल को इक्वेटर इज y axis. Equator means perpendicular, right? Perpendicular is right. At a point P located at a distance r from the origin, the electric field direction is along the y direction. Okay, so इधर से वो क्या बोला, इधर से point P में the electric field direction is along the y direction. So the net electric field is like this. E is in y direction. Okay, y direction देखो ये r distance जोन में. तो मैं डायग्राम समझ में देखो, the electric field direction is along the y direction at a point P at distance r. Okay, find the angular position of P. मतलब थीटा चाहिए, इस थीटा चाहिए, angular position of P. देखते करो. So we know this one diagram, right? Like this direction, like, you know, we call this as E axis, right? E axis I called in main diagram, dipole I said. So this is theta, this is alpha, right? And this is theta, this will be theta only. Yes. Okay, now try. So tan inverse root 2. Tan inverse root 2. Yes, very good. Tan inverse root 2. Find the angular position of the point P. Angular position of the point P. Theta चाहिए, the point P. We know the relation between tan alpha and tan eta, right? Tan alpha is equal to half tan eta. And what is the relation between alpha and theta? Alpha plus theta is nothing but 90. Diagram, because it is in y direction is given, right? ये वाला point P में. So therefore alpha plus theta is 90 degrees, right? Now alpha के जगह में I can substitute 90 minus theta. Tan 90 minus theta is equal to half tan theta. So therefore cot theta is equal to half tan theta. So 1 by tan square theta equal to tan inverse root 2. This is theta. Okay, now find the magnitude of electric field at this point P. So electric field in terms of Kp and R we have to see, no? Kp and R में terms में चाहिए. Root But 2 cos को नहीं चाहिए. Cos निकल जाने का. root 2 Kp by R cube. Yes. Okay. Good. Okay. Electric field at this point is formula क्या है? K general point है ना? Kp by R cube under root 1 plus 3 cos square theta. Okay. We know tan theta is root 2. How to get cos theta? Tan theta is root 2. We done in 10th class, right? Trigonometry में. This is root 2 by 1, right? This is theta. So it is opposite by adjacent. So इसमें क्या होगा? Under root 2 plus 1 under root 3 आएगा. So cos theta is 1 by root 3, right? No substitute here. Kp by R cube under root 1 plus 3 into cos square theta.
So 1/√3 whole square is 1/3. So this is cancel. So therefore √2 kp by r cube. समझ में आ रहा है? सो ऐसा क्वेश्चंस को थोड़ा डायग्राम समझ में नहीं आए तो वी कैन नॉट एबल टू सॉल्व. डायरेक्ट फॉर्मूला बैठ करना प्रॉब्लम होगा. दोनों दोनों चाहिए, डायग्राम चाहिए, फॉर्मूला भी चाहिए आपको. ना अंडरस्टूड. चलो नाउ टॉर्क वाला करने वाला है. ओके, टॉर्क का टाइम हो जाएगा. हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉर्क का भी डाइपोल की वजह से टॉर्क भी करने वाला नेक्स्ट क्लास में.